Honorable Election Commissioner Shri Anup Chand Pandey ji on my right and Shri Arun Goyal ji on my left, senior officers, DCs of the Commission, friends from media present here. First of all, very good morning. We have gathered here to announce the schedule for the Karnataka election and the by-elections. You may recall that after the successful and peaceful conduct of elections in the three states of the Northeast, just early this year, it is now time to move to the southern part of the country. What a stark difference in terms of geography, culture, and varied challenges that we have in two different sets of states where we are doing the elections. The challenges in Northeast were very different than what we have in Karnataka. But what remains consistent and constant is our commitment to deliver a free, fair, transparent and inducement-free election. So be it Northeast, South, across the length and breadth of the country, we are committed to do it. And you may recall that the challenges in the recently held elections were more in terms of controlling the violence, handling the tough topography, making the logistical arrangements, making machines move, the electoral machinery move, whereas in Karnataka, the challenges are of different nature, which I will elaborate. Well, you eagerly must be waiting for the schedule straightway, but just give me 15 minutes, 10 to 15 minutes to tell you the basics profiling. The term of Karnataka Legislative Assembly is till 24th of May 2023. So we have to complete the entire process before that. There are 224 assembly constituencies, of which 36 are reserved for the SCs and 15 are reserved for the STs. Let me just also tell you the electors' profile in the state, because a healthy electoral roll is a prerequisite and a foundation for any election activity and an exercise. Total electors in the states are 5.21 crores, of which male electors are 2.62 and female electors are around 2.59, almost equal. And during the SSR exercise which we completed, the Commission laid special emphasis on the, as I have been repeatedly saying, on the inclusive part of the electoral roll and also the human part of the electoral roll. What does it entail? It means we laid special emphasis on registration of new age voters between 18 to 19 years, women, transgenders, persons with disabilities, and also in Karnataka on the particularly vulnerable tribal groups, who are the disadvantaged groups. If you look at any human development indices, the particularly vulnerable tribal groups are the one who are at the lowest of the ladder. So we said we'll have a special outreach. I'll touch on that in one of the slides. The role gender ratio in the state stands at 988, which is very healthy. And the copies of the electoral rolls, including the process by which it was prepared, have all been shared with the political parties. And the involvement was at every stage. So friends, senior citizens and PWDs, as we have been putting a special emphasis on this part, and it's important in case of Karnataka because it will happen first time in Karnataka. The total number of 80 plus electors is 12.15 lakhs. So you would see that it's an increase of 32% from the 2018. And they also includes 16,976 proud electors who are 100 plus. We'll be having a special outreach for all of them. The persons with disabilities, as you would see, a sharp increase because of our focus, has increased to 5.55 lakhs. This is an increase of close to 150% over 2018. And you may ask me how it has happened. It's the social justice departments of the states give scholarships to various persons with disabilities.
we also collected data from them, so that, we can have an outreach. We can go to their houses and have a special outreach to persuade them, to facilitate them to become our voters. And this is the result of that. And through your medium, we would like to welcome them, pay our gratitudes to all the senior citizens and the persons with disabilities, transgenders, to please come and participate with all vigor in the election, and we are having a special attempt for that, which includes that for the first time, this facility for voting from home would be available in Karnataka to the 80+ voters and also to the persons with disabilities. It has been a very successful and very reassuring and very happy experience for all of us in the Commission. To just report through you, in recently 5 state elections which we have had recently, Himachal, Gujarat, Tripura, Meghalaya and Nagaland, over 73,200 persons with disabilities and 80+ senior citizens, we have been able to go to their house and take their votes. I mean, for one vote, 3 to 4 persons go. All the political parties are informed, it's videographed so that secrecy is not compromised. But it is worth the effort. It puts a pressure on the administration, on the already strained administration during the elections. But फिर भी इसमें जाना, वोट को लेना घर से सीनियर सिटीजन्स और पीडब्ल्यूडीज का एक बहुत ही सुखद अनुभूति है, और इसको हम आने वाले इलेक्शंस में और इसमें लगातार सुदृढ़ करते रहेंगे. So coming to the inclusive elections and connecting with the youth, which is very critical in case of all the elections, but more so in Karnataka and in terms of youth and urban. I'll tell you how. So the first time voters in Karnataka, because of our special effort as I just mentioned, has increased from 18 to 19 by 9.17 lakhs. And the young electors gender ratio, which was low at 720, has increased to 820. It's a jump of 100%. So means we have been able to get more and more girls in the age of 18 to 19 registered in our electoral rolls. So it's far more gender sensitive now. And all young voters who are turning 18 years by 1st of April 2023 will be able to vote in this forthcoming election. So this again, आपके माध्यम से मैं इसको फिर से बताना चाहता हूँ. कमीशन के एफर्ट से 4 क्वालिफाइंग डेट्स का अमेंडमेंट लॉ में हुआ था कि हर क्वार्टर की फर्स्ट डेट. तो हमने एडवांस में एप्लीकेशन जो लेने का प्रोसेस शुरू किया, उसमें 1 अप्रैल को जो लोग 18 इयर्स के होने वाले हैं उनकी पिटीशन हमारे पास पहले से आके रखी हैं, और वो भी लोग 41,000 ऐसे हैं जो बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन अमेंडमेंट वुड बी एबल टू कास्ट देयर वोट. अदरवाइज दे वुड हैव टू वेट, they would have waited for the next year 1st of January to become eligible. So this is the power of that amendment which we have just wanted to tell you. And youth participation in the electoral process, as you know, brings in the required energy and rhythm, yielding to a more vibrant and argumentative electoral process, participative electoral process, which is again a very healthy sign for the democracy. And as our National Voters Day theme was, there is nothing like voting. So this is what we are popularizing amongst the youth, and through you also requesting that when we have taken so much of effort to make them voters, let them also respond by coming to the polling stations on the date which we'll announce now. Coming to the particularly vulnerable tribal groups, as are again a human face and an inclusive agenda for the electoral rolls. The purity and the inclusiveness and the health of electoral rolls is one of the focus of the Commission, more so this year. So there are 2 PVTGs in Karnataka, Jhenukurba and Koraga tribes. And the total population is 46,852 and 18 plus is 30,507.
And you would be happy to know that we have been able to enroll 100%. Primitive, these 2 PVTGs. और इनके लिए 40 एथनिक बूथ भी हम बना रहे हैं ताकि वो अपने वैल्यू में अपने तरीके से they feel happy participating in our elections. Similarly, for transgenders, total transgenders in the state as per the records of the department concerned is 42,756, and we have been able to enroll through our outreach in our process 41,312, which is again almost complete. कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को इलेक्टोरल रोल में एज ट्रांसजेंडर मार्क नहीं कराना चाहते. हमारी उनसे अपील है कि अगर ऐसे कुछ लोग छूट गए तो जिस फॉर्म में जिस सेंसिटिविटीज के साथ वो अपने आप को अटैच मार्क कराना चाहते हैं, हम उसमें एक कदम उनसे आगे बढ़ के उनकी मदद करेंगे और उनको ऐड करेंगे. नाउ आफ्टर वोटर्स टू गिव यू ए फील एंड ए ओवरव्यू ऑफ द पोलिंग स्टेशंस. There are 58,282 polling stations in the state of Karnataka, of which 20,866 are urban. And I'll tell you what special efforts are required for these urban area polling stations. Average electors per polling stations comes to 883, and we'll be doing as usual the 50% webcasting, which comes to 29,140. On all these sensitive booths which have been identified, we take 4-5 measures. Either there would be a CAPF, or there would be webcasting, or there would be a micro-observer. It's a combination, and cumulatively, through a combination of all of this, we tend to put more vigor and vigil on the sensitive booths. For enhanced voter experience, how do we ensure that voters feel happy, want to come to the booth and take part in the festival of democracy? There would be close to 1,320 polling stations which would be managed exclusively by the women. ये भी उनके हर इलेक्शन में हम कर रहे हैं, उनके एक एम्पावरमेंट का भी पार्ट है. There is a feeling that yes, we can do it, and election exercises in the even remote places. There were booths in the recently held elections which were all managed by the women, including the security personnel. और इसी तरीके से 240 polling stations would be model polling stations, जिसमें eco-friendly और green booths उनको बनाएंगे. और ये भी एक नया प्रयास शुरू किया है कि जब यूथ नहीं आते हैं वोट को भी अपने यूथ जो एम्प्लॉयज हैं उनसे मैनेज करें. तो जो भी यंगेस्ट एम्प्लॉयज हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में जो भी अपॉइंटमेंट्स रिसेंट हुए हैं, उन्हीं को ट्रेन करके उनको भी एम्पावर कर रहे हैं. तो इसलिए 224 such booths would be set up, which would be managed by only the youngest possible the employees of the government, and 100 booths would be managed purely by the persons with disability. We have started another attempt from the last 3 elections, which is an ongoing effort, that we want to make now the availability of AMF almost permanent in all these schools. And here in Karnataka, we are progressing quite well. As you would see on the slide, we are almost 98-97% in terms of all the parameters, which are ramps, toilets, electricity. I'm sure that, and hopefully, in this election, the time is still there, till the elections polling stations are prepared. Whatever 1 or 2% in each category is left, we have emphasized to the state government, for which we have got a quite firm assurance that they will try and convert 100% facilities in all these schools on a permanent basis. And if this happens, which I'm sure, which we are all sure would happen, that's a goal to aspire for the elections coming during the current years, in the later this year, and also the general election. So friends, now coming to the urban apathy. This is one area, as I said, that in Karnataka the areas of concerns would be different.
So urban apathy is one, and money power is another, which will come to after this. So in urban apathy, the total voter turnout in the state is 72.4 in 2018. Against this, as you know, the overall country, if you look at the 2019 general elections, तो जो 20 टॉप के कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनमें सबसे कम वोटिंग हुई, उनमें से 9 अर्बन एरिया में, इसके नाम यहाँ दिए हैं, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता, बट दे आर इन द टॉप 20. एंड इफ यू लुक एट दी कर्नाटका, तो जहाँ 72% वोटिंग है, वहाँ बेंगलोर के साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल और बंगलौर में वो वोटिंग काफ़ी कम है. 57, 51, 53, 55, 57 as against 72. And another disturbing trend is that it is reducing even from the earlier election, 2013 election. It was even more in 2013. It is reduced in 2018. So when we went there, we did call a large number of universities, students, and talk to them. And then we also decided that in addition to the awareness activities like the electoral literacy clubs and the voluntary action forums, we'll also do because the Karnataka and Bangalore happens to be the knowledge city and the IT city of the country. So why don't we take advantage of their expertise? So we requested the IT sector, and through you we want to thank that IASC came forward, and they are doing an electhon. Instead of hackathon, we are saying it electhon. For what? They say, we are saying that how to enhance the participation of urban and youth. Can we technologically connect to them more? Can we do outreach in a different way? And how to ensure the registration of new voters more and more? We don't have to work so hard. Is there a problem with our software? Is there a way we can motivate them to do it? How can, from the universities, or from the colleges, schools rather, from the 12th, almost everybody becomes 18. 12 years, 12th class when you pass plus 5 if you add, so mostly 17, 17 and a half and 18. तो आप वोट तो देना शुरू कर रहे हैं, बट आपको एक कमिटमेंट की जरूरत है. तो इस इलेक्थॉन में हमने ये भी रखा है कि डिवाइस ए सॉल्यूशन दैट हाउ कैन इट बूस्ट वोटर टर्नआउट ऑन द इलेक्शन डे. और उसका भी एक मेथड हमने और अपनाया, वो भी आपको मैं अभी आगे बताऊंगा. ये कितनी इंस्टीट्यूट्स हमारे साथ इसमें जुड़ गई हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, large number of startups, large number of IT professionals. So we are thankful to all of them. And 47% have added on working on how to do the registration free. Some are working easily. Some are working with us on how to make the youth turn out on the day of election. So this result we will again share with everybody when it comes, the solutions when they are given, and जो आने वाले इलेक्शन से उसके लिए हम लोग समझते हैं कि ये एक हमें ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी आउटरीच बताएगा जो उनकी समझ में आती है, बिकॉज इट्स ए प्लेस where you have most of the educated youth and the urban areas. As regards the candidates, you are all aware, just to repeat the same thing, the know your candidate and the affidavits, all this are available on through the technology. Knowing the candidate is possible through the Know Your Candidate application. And for political parties, these applications are helping them to file the nominations online and to also apply for the entitlements which they have in terms of passes or in terms of booking the grounds for the election rallies, etc. And it is all strictly, everyone has been instructed to follow first in, first out principle. जिसने पहले अप्लाई किया उसका डिजिटल ट्रेल उसमें रहेगा. ऐसा नहीं कि अप्लाई एक पार्टी ने किया और आपने दूसरी पार्टी को जगह दे दी. नहीं, इट इज ए फेयर एंड लेवल प्लेइंग फील्ड विच दे हैव टू एंश्योर. सी विजिल ऐप की काफ़ी प्रचार कर्नाटका के इलेक्शन में किया है, बिकॉज ये वहाँ बहुत रिलेवेंट है.
because what new challenge we found in Karnataka is, in addition to the youth and urban apathy, is the money power. So this is being popularized a lot, and I'll share with you, even before MCC, what had happened. MCC will come in force from today. But when we went there, I'll show you, just because of our sincerity on this subject and telling the district officials and enforcement agencies what is the result. I'll show you that. So before coming to that, just to narrate that in recently held elections, total number of polling stations are given here, and there was no repolling. So we want to carry forward this trend. No violence, no repolling, and no और EVM भी बच गई, उनको भी गाली वाली ज़्यादा नहीं पड़ी. So मतलब उसी चीज़ को आगे बढ़ाने ते हुए हमने वहाँ काफ़ी कोशिश की है कि जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं उनमें आप ऐसे प्रोसेसेस को अपनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स आर ऑन द जॉब, that they make the experience for the voter very good, so that they are encouraged to come. And some are working even on applications where, or special highways which have been identified, and godowns which are in under the commercial taxes department, warehouses, liquor, all have been mapped, so that there is no increase or a trend of goods coming there. Similarly for freebies, eBay bills are being checked to see in any particular district if there is an increase of the material getting entry to those particular districts. SLBC, we have also requested all the banks, directed them actually, that no movement of the vans which carry cash to fill the ATMs will happen during the late hours, so that they cannot be used. At times, such vans are used for carrying cash. All that has been stopped. In terms of what happened in Karnataka after our last visit, which was, see just some pictures. Even MCC has not come into force. And this is across the parties. Freebies, cash, liquor, all that have been started already having been seized. And it is already crossed almost what was seized during the elections last time. And I want to thank the district administration and enforcement agencies on this. Because having by and large tackled the issue of muscle power in the elections, this is now the focus and the time that we handle the money power also. And before MCC comes into being, because हमने उनको यही कहा कि MCC का मुहूर्त क्यों देखना है? आपके पास तो सेक्शंस हैं आईपीसी की. अगर कोई भी ब्राइब के लिए, वोटर्स को इंड्यूस करने के लिए अगर अभी से सामान लेके आ रहा है, उस पर कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है बैग के ऊपर, कुकर के ऊपर रखे हुए हैं ये गोडाउन, इसमें देखिए आप लिखे हुए हैं, नाम भी लिखे हुए हैं, तो उसको सीज करके उस पर क्रिमिनल केस करने के लिए एमसीसी की जरूरत क्यों है? एंड थैंकफुली ऑल ऑफ देम हैव रिस्पोंडेड एंड वी आर श्योर दैट दिस विल पीक नाउ. एंड अगेन थ्रू योर मीडियम वी वांट टू से दैट citizens also help us by using C-Vigil more and more, and it is our guarantee that in 100 minutes we will not only reach there, we will also report back saying as to what had happened. So friends, now coming to what you have been waiting for. The schedule for the Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5
in single phase, and day of counting would be 13th of May. So this is the schedule for the Karnataka elections. There are also some by-elections which are due in the country in various legislative assemblies and parliamentary constituents. So we are simultaneously announcing the by-elections also. So the by-elections will take place for the assembly in Odisha, Jharsuguda, in UP, in Suar, UPAC 34, 395 Chanabe in UP, Soyong in Meghalaya in 23, and also in the parliamentary constituency number 4 in Jalandhar. So this will fill up all our vacancies till February 2023. So this is the schedule, and I once again, before ending, through the friends from media, I want to appeal to all the voters of Karnataka, young, urban areas, rural area, PBTGs, women, transgender, PWDs, senior citizens, to please come forward and take part in the Festival of Democracy. Thank you very much. Thank you, sir. We'll now be able to take questions. राइट से शुरू करते हैं. नीरज. हेलो सर, नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से. कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा आपने कर दी एक चरण में, और कई बाई इलेक्शन की भी घोषणा की है. वायनाड लोकसभा उपचुनाव, वायनाड सीट भी खाली हो गई है. चुनाव आयोग को जानकारी लोकसभा सचिवालय की तरफ से भेज दी गई है. वहां उपचुनाव की घोषणा आज आपने नहीं की है. आने वाले दिनों में करेंगे या कोर्ट की कार्रवाई का इंतजार करेंगे, क्योंकि 30 दिन का वक्त राहुल गांधी को मिला है. Another question here. आपने ब्रह्म प्रकाश आपने. सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे हूँ जी न्यूज़ से. मेरा सवाल यह है कि आमतौर पर वोटिंग के दौरान जो मैंने देखा है कवरेज के दौरान दिक्कत होती है कि लोगों के पास कई बार इलेक्शन आई कार्ड होता है लेकिन वोटिंग लिस्ट से उनका नाम गायब होता है. ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं. तो इन चुनाव के दौरान उन लोगों के लिए किस तरह से व्यवस्था होगी कि कई लोग कहते हैं कि हमारा नाम कटवा दिया गया यहाँ से जबकि वोटिंग कार्ड है, तो क्या मैकेनिज्म है? थैंक यू. हेलो दीक्षा. Hi sir, Deeksha Bhardwaj from Hindustan Times. Sir, my question is regarding EVM. Since you mentioned the opposition parties have come together and they've alleged that they're going to take up the issue of EVM tampering and EVM frauds. What is the response from the Commission on this? Because they're saying that their questions have so far not been answered. पूनम आपने. नमस्कार, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से. सर, मेरा प्रश्न है, आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं लेकिन पिछले चुनाव में भी जो शहरी मतदाता हैं उनकी उदासीनता कम होने का नाम नहीं ले रही है. इस मर्तबा कर्नाटक चुनाव में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर क्या प्रयास किए गए हैं? पहला प्रश्न लेता हूं मैं, जो इलेक्शन आई कार्ड ना हो तो क्या करेंगे वोटर्स. तो पहली बात तो उनको अभी से वोटर किस बूथ में कौन वोटर्स हैं इसकी लिस्ट अभी से अवेलेबल है. एप्लीकेशन है हमारा, उसमें वो अभी से अपना नाम और पोलिंग स्टेशन चेक कर सकते हैं. तो ये तो पहली बात है. सो इट्स बेटर टू चेक इन एडवांस. और अगर किसी वजह से अभी नाम नहीं है तो वो नाम भी अभी ऐड हो सकता है. वो नाम भी नॉमिनेशन के दिन तक, लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक अभी भी नाम ऐड हो सकता है, विच इन दिस केस इज 20 अप्रैल. तो 20 अप्रैल तक अभी भी नाम ऐड हो सकता है. उन्हें चेक कर लेना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए. और इसके लिए टेक्नोलॉजिकली हमारे ऐप पर भी व्यवस्था है और ARO के पास भी व्यवस्था है और पोलिंग स्टेशन वाइज लिस्ट पे. तो ये पहली बात है. दूसरी बात, अगर उनके पास बाई चांस इलेक्शन आई कार्ड नहीं है तो उससे कोई परेशानी की जरूरत नहीं है. देयर आर 15 मोर डॉक्यूमेंट्स विच दे कैन ब्रिंग. उसकी लिस्ट पूरी आज मैंने नहीं दिखाई, मैं अभी उसको ट्वीट करा दूंगा, सबके साथ शेयर हो जाएगी. उसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, बहुत सारी चीजें हैं. मोर और लेस कोई ना कोई चीज उनके पास होगी ही.
तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि वो बूथ पर आएं और आने के बाद उनको वोटिंग करने के लिए अनेबल किया जाए। क्या था बताइए? इलेक्शन के दौरान कि उनके पास वोटिंग आईडी कार्ड होता है, लेकिन जब उस पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो उनका नाम लिस्ट से गायब होता है, तो वोट नहीं कर पाते। ऐसा मैंने कई बार विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में देखा है। तो उनके लिए क्या मैकेनिज्म? तो उसके लिए मैंने जो पहला आंसर दिया वो है कि अभी से उस एप्लीकेशन जो हमारी है उस पर जाके, वोटर हेल्पलाइन पे जाके अपना नाम और अपना बूथ नंबर अभी से देख लें, और उसमें भी अभी हमारे पास में ये समय उपलब्ध है। और इन एनी केस उनको कहीं ना कहीं बूथ में नाम तो होगा ही। अगर ये लास्ट टाइम से चेंज भी हुआ है किसी वजह से, तो उसका पब्लिकेशन किया गया है। उनके कैंडिडेट के पास भी लिस्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी लिस्ट है, उनके पास भी टेक्नोलॉजिकली देखने की व्यवस्था है। अर्बन अपैथी के बारे में पूनम जी ने पूछा, तो दो तीन बातें हम कहेंगे कि एक तो ये पूरा एजेंडा अर्बन अपैथी का अब कम से कम मेन डिस्कोर्स में आ गया है। अब आपने ये प्रश्न उठाने शुरू किए हैं और इससे भी जागृति धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। एक ही फेज में चुनाव होंगे। 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को मतगणना होगी। यानी कि अब से, आज से ये समझ लीजिए कि लगभग 40 दिन बाद वोटिंग जो है कर्नाटक में होगी। 10 मई एक ही फेज और 13 मई को मतगणना। और इसके साथ ही आपने सुना किस तरह से राजीव अरोड़ा की तरफ से ये कहा गया कि जो हिंसा है उस पर काबू पाया गया है। ईवीएम को लेकर भी वो चुटकी लेते हुए नजर आए और कैसे ये कहा गया है कि दोबारा वोटिंग की जरूरत ना पड़े, इसको लेकर भी व्यवस्था है। और इसके साथ ही हमारे साथ लगातार बने हुए हैं आलोक मेहता जी और साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। लेकिन आलोक मेहता जी, पहले आपके पास आना चाहूंगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसके साथ ही एक फेज में वोटिंग होगी। और आपसे जरा ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी अगर शुरुआती तस्वीर देखें तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों के लिए टफ फाइट जो है वो कर्नाटक में नजर आ रही है। आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं, जावेद हुसैन। जावेद, हमने देखा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान 10 मई एक ही फेज में चुनाव, 13 को मतगणना। और इसके साथ ही किस तरह से राजीव अरोड़ा कहते हुए नजर आए कि हिंसा पर काबू पाया गया और ईवीएम को भी वो चुटकी लेते हुए नजर आए, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि इस बार ईवीएम को लेकर किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं हुई। को लेकर भी कहीं न कहीं जो मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और खासतौर से कई बार शिकायतें आती थी पोलिंग बोर्ड की कि मशीन काम नहीं कर रही है, तो इसको लेकर उन्होंने बताया कि पूरी तैयारी के साथ जो है कर्नाटक जो विधानसभा इलेक्शन है 2023 में का जो है वो पूरी तरीके से तैयार है कराने के लिए। और 10 मई 23 को जो वोटिंग होना है और जो काउंटिंग है वो 13 मई को होना है। यानी कि कर्नाटक इलेक्शन जो कहीं ना कहीं लोकसभा इलेक्शन से पहले जी बिल्कुल ठीक है। जावेद, आपके पास आएंगे। आपकी आवाज ठीक तरह से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन शुरुआती अगर तस्वीर हम देखें तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों के बीच टफ फाइट देखने को कहीं ना कहीं मिलेगी। टफ फाइट जो है वो नजर आ रही है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, धन्यवाद। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव होता है, पंचायत से लेके लोकसभा तक के चुनाव। और इस दृष्टि से कर्नाटक के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जागरूक और आधुनिक संपन्न राज्यों में से कर्नाटक एक है प्रमुखता से। और इसलिए, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन आप जेडीएस को मत छोड़िए। जेडीएस के बिना जो शक्ति संतुलन है उसका एक अपना अलग महत्व है। उनके तो अपने देश के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और ये सही बात है कि कुमारस्वामी अभी उनको दोनों, कल भी उन्होंने न्यूज एक्सको और इंडिया न्यूज को इंटरव्यू में कहा है, हमारे जो ब्यूरो प्रमुख थे उनके साथ, और उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, हमारे पास तो दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमारे साथ आ जाइए, लेकिन कुमारस्वामी का जेडीएस अलग से चुनाव लड़ रहा है। हाँ, ये सही है कि सबसे बड़ी प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी के लिए, वैसे तो अभी कई चुनाव जीतती रही है, लेकिन कर्नाटक इसलिए महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के अध्यक्ष इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कर्नाटक के हैं। और उनके दिमाग में एक ये भी बात रहती है कि इंदिरा गांधी की वापसी चिकमगलूर बने कर्नाटक से हुई थी, जब जनता पार्टी आई 77 के बाद, 78 के बाद। ऐसी स्थिति में अब एक तरफ राहुल गांधी शायद ये सोचते हैं कि उस तरह की लहर होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा एक लाइन में ये जोड़ूंगा
कि उसके बाद जब इंदिरा जी फिर पावर में आ गए 80 के बाद, तो 82 में गुंडू राव, जैसे आज मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन वो राष्ट्र के अध्यक्ष है पार्टी के, लेकिन गुंडू राव उनके प्रमुख मुख्यमंत्री थे वहां, और बुरी तरह कांग्रेस पार्टी हार गई थी। तो इसलिए ये गलतफहमी होना कि जो कुछ इंदिरा जी के समय में हुआ वो दोनों तरफ संभव है। आप पावर के बाहर रह के अकेले जीत गई थी, लेकिन पूरी पार्टी के लिए बाद में जब सत्ता में रहते हुए भी मुश्किल होती है। लेकिन आलोक जी, एक चीज समझना ये भी जरूरी है, क्योंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव है और कर्नाटक जो है वो बीजेपी के लिए दक्षिण के राज्यों का द्वार जैसा है और 28 लोकसभा की सीटें हैं और बीजेपी की अभी वहां पर सरकार है। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए कर्नाटक? बिल्कुल, आपने सही कहा। यही में आ रहा था कि पहले तो चुनौती है कांग्रेस और जेडीएस की, और सत्ता में रहने के बाद देखिए कल भी एक गिरफ्तारी हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक रहे, उनके बेटे का सारा मामला मंत्री रहे। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहते हुए बड़ी चुनौती है। लेकिन देखिए नरेंद्र मोदी और जो उनकी पूरी पार्टी का जो नारा है वो इस बात का है कि डबल इंजन से हमने जो कुछ तरक्की की है, उनका विकास मुद्दा है। वैसे ये मुद्दा फिर भी आ रहा है, लिंगायत और मुकलिंगा को लेकर के उनका आरक्षण बढ़ाया गया है, कुछ और। लेकिन जो चुनौतियां हैं वो सचमुच में भ्रष्टाचार, वैसे राष्ट्रीय स्तर पर पहले भी जो पार्टियां हैं दोनों जो चुनौती दे रही है उनके ऊपर ज्यादा आरोप रहे हैं। बीजेपी पर तो अभी कुछ आरोप आए तो उस पर कार्रवाई भी हो गई, उनको जेल भी बाकायदा गिरफ्तारी हो चुकी है। इसलिए ये मुद्दा सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए, आपने ठीक है, लोकसभा चुनाव के लिए इसलिए नाक का सवाल है क्योंकि दक्षिण में कर्नाटक एक बहुत बड़ा राज्य है जहां से इन्होंने अपनी विजय यात्रा शुरू की थी, और इसीलिए उनकी निगाह दक्षिण में माने तेलंगाना पर है। उसके तत्काल बाद, इस चुनाव के बाद तेलंगाना है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, लेकिन तेलंगाना आंध्रा में ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की निगाह लगी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि देखिए आलोक जी, क्योंकि अगर हम कांग्रेस को समझे, कांग्रेस को इस बार उम्मीदें ज्यादा हैं कर्नाटक से। ये इसलिए क्योंकि जब हमने देखा राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज्यादा वहां पर समय बिताया और सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है वो राहुल गांधी को कर्नाटक से मिला, और इसके साथ ही क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां से आते हैं तो महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए भी हो जाता है कर्नाटक। बिल्कुल सही बात यह है कि कांग्रेस के लिए तो और ज्यादा है, क्योंकि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पीके शिव कुमार। देखिए आज अभी हमारा ये जब अनाउंसमेंट शुरू हुआ उसके पहले अपने ही चैनल पर दिखाया जा रहा था कि नोटों की बरसात डीके शिव कुमार जी की सभा में हो रही। आप अंदाज लगाइए धन की, जैसे जबकि अभी इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि हम बिल्कुल कंट्रोल किए हुए हैं मनी पावर को। इवन चुनाव की जो आचार संहिता तो आज लागू होती है जब से ये चुनाव की घोषणा होती है, लेकिन पहले से ऐसे निर्देश थे कि धन का बल का कोई उपयोग हो रहा है तो उसको नियंत्रित किया जाए। लेकिन डीके शिव कुमार जी की सभा में जैसी रिपोर्ट है, मैं समझता हूं उसकी और पुष्टि हमारे और संवाददाता करेंगे ही, जेपी हमारे वहां के बड़े प्रमुख एडिटर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा विवाद का मुद्दा रहेगा कि कहीं, और उनके ऊपर ईडी के छापे वापे पड़ चुके हैं पहले भी। ठीक है आलोक जी, थोड़ी सी समय की कमी है, जावेद भी हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, क्योंकि जिस तरह से जिक्र कर रहे थे आलोक जी को आपने सुना होगा, डीके शिव कुमार की सभा जहां पर नोट उड़ाते हुए वो नजर आ रहे थे, चुनाव के ऐलान के साथ साथ बीजेपी को एक मुद्दा भी मिल गया, क्योंकि वो कल का वीडियो है जहां पर वो नोट उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पैसों को लेकर किस तरह से यहां पर उड़ाते हुए वो सभा में हम देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर नोट उड़ाए जा रहे हैं तो बीजेपी इसको लेकर सवाल खड़े करेगी। जी बिल्कुल, बीजेपी लगातार जो है इस चुनाव को लेकर जिस तरीके से जो बात आ रही है, वैसे में बीजेपी के लिए जो कर्नाटका इलेक्शन है बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि जो विपक्ष है कांग्रेस, वो लगातार भ्रष्टाचार और इसके अलावा कई ऐसे संगीन आरोप है जो बीजेपी पे वो लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ अपने विकास के मुद्दे को लेकर कर्नाटक में एक बार फिर से कमबैक करने की कोशिश कर रही है। 2023 का जो इलेक्शन है बीजेपी के लिए इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि साउथ में कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है जो कि बीजेपी के लिए एक बेहद अहम गढ़ माना जाता है। अगर कर्नाटका बीजेपी एक बार फिर से जीत जाती तो यूं समझ लें कि जो लोकसभा से पहले बीजेपी अपने आप को मानेगी कि उसने सेमीफाइनल वहां से जीत लिया है, क्योंकि कर्नाटका एक बहुत बड़ा स्टेट है। ठीक है जावेद, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आगे आपसे जुड़ेंगे और तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। कर्नाटक का क्या कहता है जातीय समीकरण और क्या क्या समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे, इस पर